you can see the paratha, the quality of the paratha is very different, and plus यहाँ के जो होते हैं they are like very healthy also. So usually I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Assalamualaikum to everybody, this is Lamyaa and welcome back to another amazing video. और आज की जो वीडियो है बेसिकली बहुत ही टाइम बाद बन रही है बिकॉज अब जो है these days like I'm not uploading a lot of videos. उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ अपनी जॉब में और बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स मेरी इंक्रीज़ हो गई हैं एंड उसके अलावा लाइक अर्लियर आई वाज वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ कंटेंट कि मुझे किस तरह की वीडियोज़ डालनी चाहिए. तो अगर तो आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ या किसी बारे में बात करूँ तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक एंड आई वुड वेलकम द न्यू सब्सक्राइबर्स जिन्होंने रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग लाइक दिस एंड इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम सो you can also follow me over there. Okay guys, so in today's video you will get to see different things because I am just starting my day because यहाँ पर अभी जो time हो रहा है that is like around 11 o'clock in the morning and I will be starting my day with the breakfast. So basically in Karachi it's like very famous like the street food and you will find on every street this chai paratha. Although like in UAE also there is like a lot of people love these chai and paratha, but Pakistan in Karachi the taste has no comparison and plus personally it is my favorite. So यहाँ पर जो है basically morning में it's a trend कि लोग breakfast वगैरह बाहर करते हैं तो हम लोग भी आए हैं यहाँ पे to have the breakfast. फिर उसके बाद जो है we will be heading to Hyperstar. तो basically it is one of the biggest mall of Karachi and वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी भी होती है चीज़ों की. So of course जाने से पहले I will be going over there. So उसके अलावा maybe I'll get to visit some other places also today, so I'm not sure, so stay tuned. Okay जी guys, so finally the breakfast is here. So you can see the paratha, the quality of the paratha is very different and plus यहाँ के जो होते हैं they are like very healthy also. So usually इसके साथ जो होती हैं चीज़ें this is basically chickpeas which is also very common over there and I personally like to eat in the car because यहाँ पर ये है कि you know families can also sit outside but अभी जो weather के हिसाब से था we decided to sit you know like just inside and just eat and go quickly to the mall. जी जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है. सो अभी जो है बेसिकली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द डॉल्फिन मॉल जैसे कि मैंने आपको बताया जो प्लान है. लेकिन रास्ते में यहाँ पर है बेसिकली एक फुटवेयर की बहुत अच्छी शॉप है. सो अभी हम वहाँ पर रुकेंगे बिकॉज आई वांटेड टू गेट सम कैजुअल स्लीपर्स फॉर माई सेल्फ. तो इसीलिए अब हम रुकेंगे. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ टूर ऑफ दैट. ओके जी, सो दैट वाज बेसिकली अ फर्स्ट स्टॉप एंड जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे वहाँ से तो मैंने सोचा यू नो व्हाई नॉट जस्ट विजिट. सो मुझे वहाँ पे लाइक फुटवेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे सो आई बॉट देम एंड नाउ वी आर हेडिंग टू डॉल्फिन मॉल. Okay जी, so finally now I am inside the mall और now I will be giving you a quick overview of this mall. So अभी जो है जी basically I am at गुल अहमद और यहाँ पर basically बहुत अच्छी वैरायटी लगी हुई थी of like these short shirts, कुर्ते and उसके अलावा इनके ड्रेसेस पे भी काफ़ी मेरे ख्याल से सेल लगी हुई थी. So I just wanted to get like you know 2 to 3 dresses for myself और उसके अलावा यहाँ पर जो बेडशीट्स हैं उनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है. So I also bought that also for my house. Like मैंने 2 से
2-3 बेडशीट्स ले ली उसके साथ, आई जस्ट बॉट सम ड्रेसेस। ऑलराइट गाइस, सो ये है एक हर्बल शॉप एंड दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड शीप। अगर तो आपको कुछ फॉर्मल क्लोथ्स वगैरह चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। एंड ओवरऑल सो दिस इज़ बेसिकली अ वीक डे, बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी क्राउड था, लॉट ऑफ पीपल वर हियर बिकॉज सेल्स वगैरह चल रही हैं एंड प्लस इट्स लाइक काफ़ी जगह जो है बहुत अच्छी वैरायटी भी आई हुई है डिफरेंट आउटलेट्स पे। सो यहाँ से है जो बेसिकली आई वाज ऑलमोस्ट डन विद ऑल द थिंग्स विच आई वांटेड टू टेक। सो आई थिंक होपफुली आई विल मेक अनदर वीडियो जहाँ जो भी मेरी शॉपिंग वगैरह मैंने यहाँ से की है। बेसिकली मेनली इट्स लाइक ईस्टर्न क्लोथ्स जो मैंने लिए हैं यहाँ से। सो यहाँ पे लाइक वी वर ऑल डन एंड वी वर हेडिंग टू अनदर स्टॉप। गाइस, फाइनली आई एम बैक फ्रॉम द मॉल। और जो शॉपिंग थी लाइक उसमें तकरीबन हमें 3 to 4 आवर्स लग गए बिकॉज अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ लाइक 4 o'clock इन द आफ्टरनून। और अभी जो है बेसिकली आई विल बी गोइंग टू माई मदर्स हाउस बिकॉज वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें वगैरह अपनी पिक करनी है। तो अभी यहाँ से हम फ्री हो गए हैं, तो फॉर नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल हैव सम जूस, सम स्नैक्स और समथिंग, फिर उसके बाद वी विल बी गोइंग ओवर देयर। सो यूजुअली जब भी मैं पाकिस्तान में होती हूँ लाइक आई एम इन कराची, तो बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है। अगर मैं आती भी हूँ लाइक 3-4 डेज़ के लिए, तो यूजुअली कहीं ना कहीं अगर आपने निकलना होता है तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है। सो नाउ लाइक इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग। ओके जी, सो ये यहाँ पे बहुत ही फेमस है बलोच आइसक्रीम। दे आर लाइक सिंस 1945 और इन लोगों की बहुत ज़्यादा मशहूर है। दिन है वो एंड हो चुका है, लाइक नाउ इट्स लाइक 6 o'clock इन द इवनिंग। बट बात ये है कि सारे जो काम मुझे आज करने थे, मेरी लिस्ट थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, जो चीज़ें मुझे लेनी थी एंड जहाँ जाना था। तो अब जो है बिल्कुल ही एंड हो चुका है सारा। और नाउ इट्स लाइक इवनिंग टाइम, जो नाउ डेज लाइक द वेदर इज़ रियली गुड ओवर हियर। और जो शाम में है बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है और बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। सो अभी के लिए है जो ये मैं वीडियो एंड करूँगी बिकॉज नाउ आई हैव टू गो टू माई हाउस एंड आई हैव टू डू द पैकिंग एंड ऑल द स्टफ, क्योंकि सुबह की है जो फ्लाइट है। और वैसे भी आजकल जो आपकी फ़्लाइट है आपको रैपिड एंटीजन करवाने के लिए यू हैव टू गो लाइक 6 hours प्रायर्स फॉर टू योर फ्लाइट। तो मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। सो जी अभी के लिए मैं ब्लॉग एंड करूँगी। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू।